अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे, मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग एजुकेशन 301 का मिड टर्म प्रिपरेशन जो एमसीक्यूज कर रहे थे उसका सेकंड पार्ट करेंगे। 6 पेज हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, टोटल इसके 38 पेज हैं। तो मैं कोशिश करूँगी आपको सारा बताऊँ। ये आपके लेक्चर वाइज एमसीक्यूज हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं, हम डायरेक्ट आंसर्स की तरफ चलेंगे। Educators work to stimulate the spirit of fill in the blanks and acquisition of knowledge। तो fill in the blanks में क्या आएगा? Inquiry। Educators का काम होता है कि वो spirit of inquiry करें और acquisition of knowledge देखें। Fill in the blank that has memorized by learning या what are memorized by learning। तो आप बताएंगे facts और principle that has been memorized by learning। Every student have different potential of learning, यानी कि different fill in the blanks of learning, potential of learning। ये वो MCQs है जो पास पेपर्स में आए थे, तो मैंने सारे कंबाइन करवा दिए आपके लिए। ये आपकी एक बेहतरीन फाइट बन गई है। Fill in the blanks is a way of studying your own experience to remove the way you work, reflective practice। Zone of proximal concept was also established by, हम लोग शुरू में देख चुके हैं। तो proximal concept जिन्होंने establish किया था वो वाइगॉट्स्की थे। This professional standard demand from us to create a climate that promote fill in the blanks। तो इसका correct answer होगा the professional judgment। Teacher has autonomy of how to teach in a, टीचर के पास कहाँ autonomy होती है? तो क्लास में टीचर के पास autonomy होती है। Fill in the blank model is very important model of learning। तो कौन सा मॉडल है? Task analysis। Idea of teaching is an art was developed by fill in the blanks William James in 1891। Knowledge about different fact is fill in the blank stratified knowledge। Teaching has a very important fill in the blank। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है टीचिंग का? टीचिंग का बहुत इंपॉर्टेंट सोशल फंक्शन होता है। प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट एज देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक मास्टर टीचर। तो प्लानिंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये किस चीज़ में आएगा? ये मास्टर टीचर के कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। फिल इन द ब्लैंक, अच्छा ये इनवाइटिंग और डिसइनवाइटिंग वाला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपके लिए एक फाइल सब्जेक्टिव बनाई है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपको बताऊंगी कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर वो क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, पास पेपर में आया था, मैंने उनके डायरेक्ट आंसर्स लिख दिए, यानी कि हर इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने नोट्स में लिख दी। दिस इज़ द हाइस्ट लेवल्स ऑफ योर टीचिंग डेवलपमेंट। तो कौन सा होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग डेवलपमेंट में? तो याद रखें इंटेंशनली इनवाइटिंग। अब इंटेंशनली इनवाइटिंग में होता क्या है? बेसिकली इसमें होता ये है कि कोई टीचर अपने आसपास अपने कोलीग के साथ एक मसला शेयर करती हैं और कहते हैं कि आप बताएं कि इसे मैं कैसे सॉल्व करूं। फ़र्ज़ करें वो कहते हैं कि ये क्वेश्चन आ गया है मेरे सिलेबस में, ज़रा डिफ़िकल्ट, आप बताएं मैं इसे कैसे सॉल्व करूं। तो सारे बताना शुरू कर देंगे। तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ योर टीचिंग डेवलपमेंट होता है। नॉलेज इज़ क्रिएटेड व्हेन वी फिल इन ब्लैंक्स, एक्ट एंड रिफ्लेक्ट। मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन आर फिल इन ब्लैंक्स दैट इज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। याद रखिएगा प्रेजेंटेशन के 2 मोड्स होते हैं, पहला है इंडक्टिव, सेकंड है डिडक्टिव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। नथिंग इज लर्न अनलेस इट इज़ इन फिल इन द ब्लैंक लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो याद रखें कुछ भी याद नहीं आता तब जब तक ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव ना हो जाए। To achieve the learning outcome of every unit, we have to construct fill in the blank. Some instructional objectives. While fill in the blank objective, we have to use an action word that exactly show the behavior। तो क्या चीज़ होगी जो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव तो है, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं एक्शन वर्ड के थ्रू, यानी कि एज ए एक्शन वर्ड हम उसे यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब उस वर्ड का मतलब ऐसा होगा जैसे कि हम कोई ख़ास बिहेवियर शो करें। तो राइटिंग परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव होता है। इन फिल इन द ब्लैंक प्लानिंग इंक्लूड सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़, रिसोर्सेज एंड असेसमेंट एंड होमवर्क। तो असेसमेंट, रिसोर्स और एक्टिविटीज़ और होमवर्क किस में आते हैं? हॉरिजेंटल लेवल्स में आते हैं। ये लेवल हैं जी। इसके बाद वर्टिकल लेवल में फ़ौरन से क्या आता है जी? याद रखें इसमें आता है लिंक बिटवीन स्टैंडर्ड, benchmark, learning outcome and instructional objectives। Fill in the blanks cannot take place unless we do not provide opportunities to our students। तो क्या चीज़ नहीं हो सकती जब तक हम
बच्चों को एक हायर लेवल थिंकिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें तो ना करें तो याद रखें इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं हो सकती। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को प्रोवाइड की जाए एक अपॉर्चुनिटी कि वो सोच सके एक हायर लेवल तक आकर। देयर आर इन प्लान फाउंडेशन ऑफ सर्कुलम, तो कितने होते हैं जी? सोशियोलॉजिकल 3 होते हैं बेसिकली, सोशियोलॉजिकल, सेकेंड फिलोसफिकल एंड थर्ड इज साइकोलॉजिकल। 88 में हम देखते हैं जी 88 क्या MCQs है। मैंने इसमें आपके सारा लेक्चर वाइज निकाला है, तो ये काफ़ी ज़्यादा MCQs है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट MCQs थे। फिर इन ब्लैंक क्वेश्चन द हायर ऑर्डर क्वेश्चन दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली एंड इन डेप्थ, तो ये कौन से होते हैं? एनालिसिस लेवल। द आर्ट ऑफ डेवलपिंग लॉजिकल प्लान फॉर इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज इज कॉल्ड fill in the blanks, such as a plan consists of interlinked steps. तो sequencing is एक ऐसा आर्ट जिसके अंदर हम डेवलप कर सकते हैं किसी भी लॉजिकल प्लान को किसी भी इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ के लिए, तो उसे क्या कहेंगे? इसे सीक्वेंसिंग कहेंगे, यानी कि एक सीक्वेंस के थ्रू वो डेवलप होता है। अब ऐसे जो प्लान्स होते हैं ना, इनके अंदर इंटरलिंक स्टेप्स भी होते हैं। द प्रिंस ब्लैंक हैज़ बीन वाइडली यूज्ड इन अ सर्कुलम एंड टेक्स्ट कंस्ट्रक्शन फ्रॉम, तो सॉरी मेरा तबीयत ठीक नहीं है। The taxonomy has been widely used in curriculum and text construction. Fill in the blank. Then actually inductive mode of presentation is better than deductive mode of presentation. तो हमने ऊपर पढ़ा था कि इंडक्टिव और डिडक्टिव 2 मोड्स होते हैं, तो कौन सा ज़्यादा बेहतर होगा? तो इसमें आएगा जी लर्निंग स्केल ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि इंडक्टिव मोड ज़्यादा बेहतरीन है देन डिडक्टिव मोड के। सीक्वेंस हेल्प टू मेक लर्निंग मोर मैनेजेबल, सीक्वेंस किस में हेल्प करता है? लर्निंग को मैनेजेबल बनाने के लिए। कंपैरिजन या कंप्रीहेंशन लेवल ऑफ कॉग्निटिव डिस्क्राइब टू नेशन थ्योरी, क्वेश्चन आता है जी डिस्क्राइब टू नेशन थ्योरी, तो आप लिखेंगे कंप्रीहेंशन लेवल ऑफ कॉग्निटिव डिस्क्राइब टू नेशन थ्योरी। तो कॉम्प्रिहेंसिव लेवल की थोड़ी सी डेफिनेशन लिख दीजिएगा, ये 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आ जाता है जी। होलिस्टिक विजन कम फ्रॉम सर्कुलम प्लानिंग वाइल डिटेल इम्प्लीमेंटेशन कम फ्रॉम लेसन प्लानिंग, तो कैरिकुलम प्लानिंग के अंदर क्या आएगा? होलिस्टिक विजन, और लेसन प्लानिंग के अंदर क्या आएगा? इम्प्लीमेंटेशन। In curriculum planning, assessment is taken into consideration. Asking question is a skill. Question of a student are more important than the question of teacher. तो student के जो question है वो काफ़ी ज़्यादा important होते हैं बनिस्बत teacher के question के। Curriculum documents are not available in our school. तो याद रखें क्या चीज़ ज़्यादा available नहीं होती स्कूल में, तो वो curriculum development होती है। Individual education plan stands for what? तो आपको पता होना चाहिए इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान जो होता है वो IEP का एब्रीवेशन है, या उसे पूछा जा सकता है IEP स्टैंड फॉर व्हाट, तो वो इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। द कॉमन थिंग इन द टेलर मॉडल्स एंड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज दैट टीचर ऑब्जर्व द बिहेवियर। टेलर्स मॉडल, ब्लूम टैक्सोनॉमी, इवन ब्लूम टैक्सोनॉमी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले काइंडली गाइस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पसंद आती है तो कमेंट भी कीजिएगा, और दिल तोड़ने वाले कमेंट मत किया करें प्लीज़। मुझे पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, आप लोग ऐसे शुरू हो जाते हैं जैसे मैं कुछ छोटी सी बच्ची हूँ, मैं जानती कुछ नहीं हूँ। Fill blank is a very important competency of a teacher. So content knowledge is a very important competency of teacher. Fill blank are also important in teacher consideration. तो क्या चीज़ ज़्यादा important होनी चाहिए टीचर के नज़दीक? Process has different principles. These principles are the introduction of simple concept and concrete example. तो sequence जो होता है वो काफ़ी important है हर चीज़ के, या यूँ कह लें कि सीक्वेंसिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं। ये जो प्रिंसिपल होते हैं ये इंट्रोडक्शन होती हैं किसी भी सिंपल कॉन्सेप्ट से लेकर कंक्रीट तक, यानी कि आसान से मुश्किल तक के प्रिंसिपल सेट्स होते हैं। राइटिंग स्टैंडर्ड एंड बेंचमार्क इन अ सीक्वेंसेस क्या होगा? करिकुलम प्लानिंग। एक्शन रिसर्च इज़ वेरी इफेक्टिव रिसर्च फॉर टीचर। क्यों है एक्शन रिसर्च टीचर के लिए बेहतरीन? तो इफेक्टिव रिसर्च तो कहेंगे क्योंकि
बिकॉज इट एम एट इम्प्रूवमेंट, इसकी वजह से बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट आती है, टीचर को पता चलता है कि हाँ इतने बच्चों को आता है और इतना कि नहीं। एक्शन हो गया, दोबारा हम कर रहे थे। फिलिंग ब्लैंक इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिम्पसन्स हेरिटरी। तो सिम्पसन हेरिटरी की कौन सी एग्जांपल है जी? ओरिजिनेशन। डैश स्टार्ट विद द सब्जेक्ट। तो क्या चीज़ शुरुआत में होती है? टीचर सबसे पहले क्या करता है? तो टीचर सबसे पहले लेसन प्लान करता है। देयर आर डिफरेंट फिलिंग ब्लैंक्स टू डू डिफरेंट थिंग्स। तो डिफरेंट मैकेनिक्स होते हैं। Fill in the blanks provide या what provide the structure sequence of lesson। तो structure sequence of lesson याद रखिएगा गुड टेक्स्ट बुक में आता है, यानी कि सिंपल सिंपल लेसन का आपको पता चल जाता है कि क्या क्या सब्जेक्ट टेक्स्ट बुक में आएगा। वर्किंग मेमोरी इज ओवर fill in the blank conscious memory। Sequence steps are in progression, they start from simple and go to complex। Fill in the blank is the level where a child can originate things on his own। कौन सा ऐसा लेवल है जिसमें बच्चे जी अपनी मर्जी से या अपने अंदाज से सोचना शुरू करते हैं, इमेजिनेट करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं? तो याद रखें, देखिए यहाँ पर ओरिजिनेट आ गया तो ओरिजिनेशन होता है। ओरिजिनेशन इज द लेवल वेयर अ चाइल्ड कैन ओरिजिनेट थिंग्स ऑन हिज ओन। राइट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव इज, क्या हो सकता है कि परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव लिखना? तो ये बहुत ज़रूरी होता है, सो इट्स नेसेसरी। In order to in order to teach a sequence lesson, teacher need to fill in the blanks to that lesson, add complexity। Fill in the blanks is the most important as well as the most time consuming level of a planning of each teacher। Give the idea by, अच्छा यहाँ पे आपके पास दो MCQs कंबाइन किए, कंबाइन इन दैट सेंस कि या तो आपके पास ये आ सकता था कि what is the most important as well as the most टाइम कंज्यूमिंग लेवल ऑफ प्लानिंग फॉर ईच टीचर। तो यूनिट प्लानिंग जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और उसमें टाइम लगता है काफ़ी ज़्यादा। और ये किसने बताया था? ये वैश ने बताया था। Fill in the blank is a prerequisite for paragraph writing। The sentence formation is a prerequisite for paragraph writing। We have limited time to teach in a class। Bloom's taxonomy was a knowledge level or recall level where actually students recall their knowledge। बच्चे कहाँ किस लेवल पर आके अपनी यूँ समझ लें पेपर जब देना रिकॉल करें इन्फॉर्मेशन को, तो वो किस टेक्सोनमी में आएगी? तो वो ब्लूम्स टेक्सोनमी में आएगी, या नॉलेज लेवल है। यू विल ऑर्गेनाइज द एक्सपीरियंस इन सच अ वे दैट यू विल आस्क देम फिल इन द ब्लैंक्स टू ऑब्जर्व, टू फर्स्ट ऑब्जर्व एंड देन रिकॉल। तो आप अगर चाहते हैं कि ऑर्गेनाइज कर सके किसी एक्सपीरियंस को, तो आप सोचेंगे या आप कहेंगे कि सबसे पहले तो आप सुने, उसके बाद लिखें। अब टीचर्स भी ऐसे कहते हैं, जो बेहतरीन टीचर होते हैं वो कहते हैं पहले आप सुने, समझें और फिर लिखें। टीचर मस्ट कम अप विद एटलीस्ट वन एग्जाम्पल सो दैट स्टूडेंट कैन। तो टीचर के ज़रूरी है कि हर जो चीज़ समझा रही है उसके लिए एक बेहतर एग्जाम्पल दे ताकि बच्चे आराम से आसानी से समझ सकें। तो हम कहेंगे स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ईजीली। फिल इन द ब्लैंक्स फैक्ट कॉन्सेप्ट जनरलाइजेशन। अब क्या हो सकता है यहाँ पर? तो याद रखिए ये फैक्ट कॉन्सेप्ट और जनरलाइजेशन क्या है? कंटेंट फॉर्म और ठीक क्या आपसे क्वेश्चन आ सकता है हाउ मैनी कंटेंट फॉर्म्स? तो आप बता सकते हैं देयर आर थ्री कंटेंट फॉर्म्स, वन इज फैक्ट, सेकंड इज कॉन्सेप्ट, थर्ड इज जनरलाइजेशन। अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी कम्युनिकेटेड through a fill in the blanks, through a picture। Less fill in the blank is actually detailed from a unit planet या यूनिट प्लान। तो किस चीज़ में हम कह सकते हैं कि यूनिट प्लान यूज़ होता है, ये समझाया जा सकता है? तो लेसन प्लान के अंदर। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, या कौन सी वैसी थिंकिंग है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर्कुलम गाइड्स आर प्लान बाय इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में हम अगर फिर बैंक में देखें तो क्या आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जितना कैरिकुलम यूज़ होता है वो सारा सारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हमें गाइड करता है। Fill in the blank has a lot of significance of value. The significance value. So questioning has a lot of significance value. An important thing is inductive mode of presentation is process. Fill in the blanks
are those skills which are required to achieve a certain goal, enabling skill. The individualized part of IEP means that the plan has to tailored specifically to your child special need. Fill in the blanks are also very important in teacher consideration. The content and process are very important. Whenever we need to know what a prerequisite for a particular terminal objective is. तो sequencing एक ऐसी चीज़ है जिससे हम पता होना चाहिए कि कितना important है. The focus in IEP will be on the need of learner rather on the content to be taught. In daily briefing, teacher tells that student to reflect what they have learned through this process. एलिमेंट ऑफ प्लानिंग कितने थे? तो ये 11 होते हैं जी. एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग मैंने आपके लिए सेपरेट बनाए हैं, मैं इंशाल्लाह आपके साथ अब शेयर भी करूँगी. Stimulation या simulation are done in the virtual environment and are computer based. Discovery learning is a learner centered method. Discovery learning क्या है कि learner centered method है. Group processes and the classroom goal, task, reward and participation structure are more directly under the teacher's control. Fill in the blanks are the foundation that shapes particular lesson and behavior during those lessons. These important structure include क्लासरूम स्ट्रक्चर है जी. क्लासरूम के बारे में बात की जाएगी तो इसमें क्या क्या चीज़ शामिल होती है या कोई क्वेश्चन वाइज भी है. गोल्स, पार्टिसिपेशन स्ट्रक्चर. Fill in blank summarize the story including its main idea. तो synthesis level. टेलर्स मॉडल ऑफ सर्कुलम में कितने स्टेप्स होते हैं? तो याद रखिएगा 4 होते हैं. अच्छा, अब किसी भी टेक्स्ट का टाइटल बताना किस लेवल में आता है? तो सिंथेसिस लेवल में आता है. We need to sequence our learning objective. Adding on must not be confusing. Instruction aim क्या होता है जी? Student oriented होता है. If a teacher plan to take the student for field trip, then he need to consider school resources. Abstraction are something which is not tangible. Lesson is a piece of unit, not a block of a time. Learning activities are those where students are actively involved. Effective इंडिविजुअल प्लान, एजुकेशन प्लान. अभी हमने देखा था आईईपी का, तो आईईपी है जी इफेक्टिव इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, या यूँ कह ले खाली इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान होता है, इफेक्टिव नहीं होता. हैव ए की करेक्टरिस्टिक्स. तो क्या दे आर कौन सी इसमें की करेक्टरिस्टिक्स हैं? इंडिविजुअलाइज एंड चाइल्ड सेंटर. गर्ल्स परफॉर्म पुअर इन मैथमेटिक्स एंड साइंस. Teacher is a person who is making lesson plan, unit plan and term plan. A lesson plan is defined as, अब lesson plan होता क्या है? Systematic design for the development, implementation and evolution of the instruction. What we do in school, we never focus on the higher level of learning. The common thing in the Taylor and Bloom taxonomy is that teacher is there to teach the behavior. Methods are also identified in instructional planning. In evolution, we discussed that there are two things, criteria and method. Evolution में दो चीज़ होती है, कौन सी? Criteria and method. Where there is a silence, there is no learning. Fill in blank is cognitive about coordination. तो याद रखें meta coordination is काफ़ी important है. Meta coordination दो चीज़ें मैंने आपको important तरीन बताई हैं, एक Bloom taxonomy and second is meta-coordination. You have to create a checklist for assessing communication skills. The other name for learning by reflection is, तो learning by reflection को कौन सा method कहा जाता है? ये Socratic होता है. Master teacher communicate their instructional objective effectively to the student. तो learning fashion focus on goal. Non-linear fashion focus on process. तो लीनियर, सॉरी गाइस मैं लर्निंग कह गई थी, गलती मत निकालिएगा, वो बोल के हो जाता है इस तरह. तो आई एम नॉट वेल परफेक्ट, या यूँ कह ले कि मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ. लीनियर फैशन फोकस ऑन गोल होता है. नॉन लीनियर फैशन किस पे फोकस करता है? वो प्रोसेस पे करता है. Fill in the blanks occur when something already present is removed, taken away as a result of person behavior. To negative reinforcement. Gagny expand the steps of introducing
and organizing experience to include a sequence of 9 particular. तो कौन सा होता है जी ये instructional event. Teachers have to identify the method to monitor the process of student. Whenever we are planning a unit, we really need to select these learning activities very carefully. We need to make a match between process and learning activities. जब भी हम प्लानिंग यूनिट की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ ज़रूरी है. हम लोग देखेंगे कि प्रोसेस और लर्निंग एक्टिविटीज़ का लिंक होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट आवर एम्फेसिस इज वर्किंग is on working memory. Lesson plan is part of the दोबारा रिपीट हो गया जी यूनिट प्लान. Performance objective. There are three elements present. That is performance condition and criteria. अब देखें परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव में क्या होता है. परफॉर्मेंस भी आ गई, कंडीशन भी आ गई और क्राइटेरिया भी आ गया. अब परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव में हमें क्या ज़रूरत होता है. वी नीड टू अलाइन आवर परफॉर्मेंस ऑब्जेक्ट विद द सर्कुलम. सब्जेक्ट स्लैश टॉपिक यूनिट सब्जेक्ट द टाइटल ऑफ द होल यूनिट. अब यूनिट सब्जेक्ट या किसी भी यूनिट का टाइटल क्या होगा. सब्जेक्ट कहा जाएगा या टॉपिक कहा जाता है. कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें हम देखेंगे कि रीज़न फॉर डिवाइडिंग द होल थिंग इनटू कंपोनेंट्स. मोस्ट ऑफ टाइम टीचर्स कंप्लेन फॉर शॉर्टेज ऑफ टाइम. तो यूनिट प्लानिंग के बारे में हमने पढ़ा था. तो ये यूनिट प्लानिंग है. कितने लेवल ऑफ प्लान हैं जी. 3. Collegial content is not restricted to the school, rather now it has become web-based. There are 6 levels of Bloom's taxonomy of a cognitive domain. Fill in the blank is very important for the teacher. The feeling of efficiency. It is our assumption that independent skills are prerequisites, so students them are ready. लेस प्लान लीड्स टू लेस लर्निंग. ये किसने कहा था. वेल्श 1992 में. दोबारा हमारे पास आ गया जी. कीपिंग नोट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ post lesson activity because a teacher can have the record of his or her teaching. Keeping notes. Knowledge forms a content process mechanism can indicate that a child is independent to do a task by following its mechanism. इसके बाद स्कूल पॉलिसी इज कवर टू कंटेंट एज मच एज पॉसिबल. Fill in the blank. This is the knowledge that is declared in books, research, proper papers and newspapers. Declarative knowledge. According to research, the best fill in the blank is got from student and not from the government or the school administration. तो recognition होता है. ब्लाइंड है लो विजन अ कंडीशन ऑफ पार्शियल. अच्छा अब आपके पास एक प्रॉब्लम बताई गई है कि देखें अगर बच्चे को कम दिख रहा है या बहुत ही आहिस्ता दिख रहा है तो वो कौन सी कंडीशन है कि जिसकी वजह से उसके पढ़ने का परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है. तो वो ब्लाइंड और लो विजन में होता है. एक्टिव लर्निंग इज अब शुरू में हमें बता दिया गया कि देखें एक्टिव लर्निंग ऐसी है जहाँ इंसान का दिमाग एक्टिवली इन्वॉल्व होता है. तो वो एक्टिव लर्निंग में आ गया. अब ब्राज़ीलियन कौन था. फ्रायड था जी. ये एजुकेटर भी था, फिलोसफर भी था. फ्रायड कब पैदा हुआ था. 1921 में और 19 सितंबर में. यू कैन फ्लाई वॉज बॉर्न ऑन सितंबर 1921 टू अ मिडिल क्लास फैमिली इन रेस्टवे. Teacher is more interested in covering the syllabus instead of bringing conceptual change in the student. Science is organized body of a knowledge. इसके बाद ये आंसरिंग सम की क्वेश्चन टू क्रिएट एन इमेज ऑफ क्लासरूम टीचिंग एंड क्लासिंग लर्निंग. तो क्या होगा. रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस. रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर. नॉलैन एंड फ्रांसिस बिलीव दैट. अब नॉलैन एंड फ्रांसिस को किस चीज़ का यकीन था कि नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर. उसके बाद है जी much human behavior is learned by observing the behavior of others. तो ये किसने कहा था. बेंदूरा ने कहा था. ZPD stand for zone of proximal development. The gap between actual and potential learning of level of a child is zone of proximal development यानी कि ZPD. इसके बाद है जी cognitive perspective is to development student academic and thinking skill for
नोवेस्ट लेवल टू अ मोर एक्सपर्ट लेवल, तो कोजिनेटिव पर्सपेक्टिव आ जाता है। दोबारा रिपीट आ गया जी बाइकॉट्स का थ्योरी को, मेटाकोजिनेशन, ये दोबारा हमारे पास रिपीट आ रहा है तो हम रिपीट को छोड़ते हैं। कैप स्टैंड फॉर कोजिनेटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। सेट इज अ रेडनेस फॉर या readiness for action. Word complex show that here the child can do many things independently. Hereditary of affective domain was developed by Bloom and Krathwohl in 1964. इसके बाद ये in organization you start showing that behavior but that is not constant behavior. अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस हैं जी, शॉर्ट क्वेश्चंस। हु प्रेजेंट द मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, तो किसने प्रेजेंट की थी? ये मिड टर्म के शॉर्ट क्वेश्चंस थे। हार्वर्ड गार्टनर। हाउ मैनी लेवल्स ऑफ ब्लूम टेक्सोनमी, तो 6 होते हैं। व्हाट इज कॉन्सेप्ट मैथ, इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जी। तो ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉन्सेप्ट मैथ। व्हाट इज फॉर्मेशन इज विच फॉर्मेशन इज अ प्री रिक्विजिट फॉर पैराग्राफ, तो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है। तो वेयर टू आइडेंटिफाई क्लासरूम एंड असेसमेंट क्राइटेरिया, तो टीचर करता है आइडेंटिफाई। आर्ट ऑफ डेवलपिंग लॉजिकल प्लान फॉर इंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इज कॉल्ड सीक्वेंसिंग। Methods are also identified in instructional planning. 3 marks का क्वेश्चन है जी। Knowledge is a form. Knowledge, how many forms I have knowledge? Yeah, knowledge has how many forms? So there are 2 forms in knowledge. Knowledge is something that is learned by reflecting. Acting on something is called subjective. A child know about own cogitation. Your cogitation is called metacognitive knowledge. Memorize thing in facts. Task analysis model is very important model as it helps the teacher to identify prerequisites. The process of setting goals, developing strategy is planning. Answers जी मैं आपको बता रही हूँ, रेड में आपके सारे आंसर्स हैं. We discuss criteria and method in evolution. The individualized part of IEP mean that the plan has to tailor specifically to your child's special need. अच्छा गाइस, अगर आपको ये फाइल चाहिए हुई तो ये आपको इसका पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी पे ही करके लिए, तो मैं भी आगे से आपको पे ही करूँ, मतलब आपको पे करना पड़ेगा। सो अगर कर सकते हैं तो ठीक, अदरवाइज आप वीडियो देख लें, मैंने बहुत आराम से आहिस्ते आहिस्ते बनाई है आपके लिए। द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ ये हो गया जी। अ यूनिट प्लान इज़ अ fill in the blanks of lesson plan या unit. What is unit plan for lesson plan, तो हम कहेंगे hereditary is a unit plan for making lesson plan. Methods are also identified in instructional planning to student oriented. गाइस आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा, एक और चैनल था पंजाबी टच विद आर के, प्लीज़ उसे भी जाके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आगे करके आपको लिख के दिखा दूँगी, आप लिखेंगे उसे। अब मुझे उसका लिंक तो नहीं याद आ रहा, बट मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूँगी। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सॉरी, टच के मैंने कैसे स्पेलिंग लिखती हैं, पंजाबी टच विद आर के। ओके जी, इसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा, आप जाके चेक कीजिएगा, बहुत अच्छा चैनल है। We can remember those things which are connected with our prior learning. तो इसके बाद जी, adolescence is a time of profound brain growth. Advanced organized model is based upon deductive learning. Non-linear fashion focus on processes. Brainstorming is a common tool to describe a thing. The white hat in the de Bono sixth thinking hat signifies information known or need. Teacher model skill is direct instruction. Network integration is created among group of students. अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ येलो आपको दिख रही है, यानी 246 लेवल पे आपको येलो दिख रहा है, तो इसका ये मतलब है कि ये 2-3 दफ़ा आया है। सो ये से हमने येलो कर दिया। Teachers role in minimizing unguided inquiry. In United States, preschool is named as pre-K. Gatekeeper equalize participation. Generative topic actually make connection.
Divergent thinking is outside the box thinking. The learning of a core concept is lifetime. Different countries have different age level of formal education. Children can come up with different ideas and teaching must accept all idea. Children construct their own knowledge. Our teachers do not focus on core concepts. Object must be in the form that it has been measured. British preschool named nursery school or simply nursery. United States preschool named preschool and pre-K दोबारा रिपीट हुआ. Child is a natural discoverer. तो किसने कहा था? ये ब्रूनर ने कहा था. By the three, a child has twice as many brain connections. In order to start working, the cell need to with each other. तो क्या करता है सेल? कम्युनिकेट करता है. A research was conducted and it was reported that teacher mostly focused hemisphere of a children for creativity fill in blank thinking is very important. ये repeat हुआ है जी हमारे पास divergent different type. अच्छा divergent क्या होता है? एक लेवल ऑफ थिंकिंग होता है जिसपे आम इंसान हर कोई एक सतह तक सोच सकता है. उस सतह से बाहर निकल कर यानी एक बॉक्स से बाहर निकल कर सोचना, डिफरेंट सोचना जो किसी ख्याल में नहीं था, वो डाइवर्जेंट कहलाता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन अकर इन द लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर. किस में था? ये मेंटल में था. हेमिस्फेयर दिमाग की एक हिस्सा है. द नेटवर्क methodology of integration is student centered. Asking question is a skill. Brain development continued till the age of 8. 8 साल की उम्र तक दिमाग बनता है. We can remember those things which are concerned with our right side memory. तो हम लोग कौन सी चीज़ें याद रखते हैं जो हमारी राइट साइड पे दिमाग के राइट से या याददाश्त के राइट साइड वाले हिस्से पर होते हैं. Integration means putting things together. Advanced organizer model is based upon deductive learning. कि बहुत बेहतरीन आपकी फाइल है जी. Case method is very good approach to know problem solving. Pedagogy means how to teach students. Core concept of declarative knowledge. Development cannot be separated from the social content in which it occurs. Development of a gross motor skill is very important in preschool or every childhood education. Children construct their own knowledge. John Dewey says that there is no such profession where knowledge is separable from doing or practice. Application of a core concept in a new level is important. In left hemisphere, there is a logical thinking. हमने याद आपको होगा मैंने कहा था कि राइट साइड पे याददाश्त की राइट साइड पे जो होता है वो बातें याद रहती हैं जो हमने सीखी थी. अब लेफ्ट साइड में क्या होता है? तो लेफ्ट साइड में हमेशा लॉजिकल थिंकिंग होता है. वर्बल इंटेलिजेंस होती है. कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है. टीचर वांट टू टीच इन अ डेप्थ बट वांट टू कवर द सिलेबस टू. टीचर तो चाहती है कि बच्चों को डेप्थ में ले जाकर पढ़ाई यानी हर चीज़ सिखाए, बट वो ये भी चाहती है कि वो सिलेबस भी कवर करे. Curriculum या cirriculum is a dead thing. Teacher give life to it. Researchers use the word discourse for discussion. Teacher must provide the student with the opportunity to discover thing. हम 300 तक करते हैं. इसके बाद जी रुकिए मैं देख लेती हूँ. खैर ये MCQs तो आपके बहुत ज़्यादा हैं. ओके जी. परफॉर्मेंस assessment can be used to measure student problem solving potential as well as growth. Knowledge can be assessed through written tests. Usually we do not question our tradition and authority. Wait time is thinking time. The last level of Maslow hierarchy of need is self-actualization. Socratic method is the example of discussion method. Edison invented the bulb. Projects tend to be multidimensional. Different types of mental function occur in the left and right hemisphere. Pedagogy means how to teach children. Advanced organizer model is based upon deductive learning. Case method is very good approach to know problem solving. Andragogy means how adults learn. Bias says that critical thinking has two important dimensions. The inquiry learning can be rushed. Learners are
responsible for planning, conducting and evaluating their own effort. ओके गाइस, इस तरह करते हैं कि मैं अब ये थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ और भी process of assimilation lead to consideration of new option and point of view. ये मैं आपको ऐसे ऐसे ऊपर देख आ देती हूँ, आप खुद पढ़ लेंगे किस तरह, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। या यूँ करते हैं कि मैं आपको इसका एक और पार्ट बना देती हूँ ताकि आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाए। मैंने खुद ये बेसिकली 3800 में ये फाइल ली थी, अगर आप लोगों को चाहिए तो 3500 में मैं आपको दूँगी, अदरवाइज़ आप ऐसे ही देख लीजिएगा, मैं बना रही हूँ वीडियो। Lead to consideration of a new option and point of view. Assimilation. According to Cole, learning is the process of combination of grasping experience and transforming it. Curious observation is the start of inductive process. Student love integrated curriculum. So, what type of goodwill message is most likely to use an RSVP? Condolence, invitation, appreciation, holding greeting. Generative topic actually make schemes, connection, procedure और assessment, तो इसमें आएगा जी connection. So schooling average age is 3 से 4 साल के बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है. We are concerned by student team achievement. Understand is the first conceptual level. इसके बाद है जी साइंस मेथड रूट साइकोलॉजी या अथेंटिक रिसर्च. Scientific method. Theory can be falsified. Perception mean attending to a stimulate. देखिए बहुत बेहतरीन है ये. देखें आपका अब ये ग्रैंड क्विज आ गया, जो ग्रैंड क्विज आपका हुआ था, मतलब 2 साल आपका ये जब तक कोरोना रहा तो ग्रैंड क्विज होता रहा है. ये थी जी आपकी वीडियो, पसंद आई होगी. सो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.